Okay, students, welcome to your last lecture on this topic. Obviously, we skipped a few things. We've skipped a centripetal force, circular motion. बाद में पढ़ लेंगे उसको, टेंशन नहीं लेनी. Now, we're looking at methods to find out resultant vector. Okay, so सबसे पहले by addition है. If two vectors are in the same direction, then their magnitudes are added up to find out the resultant vector. Resultant vector क्या होता है? दो forces लग रही हैं तो final कितनी force लग रही होगी? Let's say this is your object. इसके ऊपर एक फोर्स आगे की तरफ लग रही है 200 न्यूटन की और एक और फोर्स आगे की तरफ लग रही है 100 न्यूटन की. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? वेट वी कैन यूज अदर पेन्स. वाओ, टेक्नोलॉजी राइट. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑफ 300 न्यूटन्स आगे की तरफ. सिंपली ऐड अप कर दिया हमने दोनों को. दिस इज वेक्टर बाय addition. Okay, now let's talk about by subtraction. Wow, I've forgotten spelling of subtraction. I'm sorry. All right. If two vectors are in opposite direction, then they are subtracted from each other to find resultant vector. Now look at this, bacho. If only I can draw a straight line, that would be great. Okay, all right. Now there's a force of 200 newtons towards the right, and there's a force of 100 newtons towards the left. What would happen now? Resultant कैसे निकालेंगे? इनको subtract करके, because they're in opposite directions. So what we'll do is simply 200 minus 100. So resultant force will be 100 newtons towards the right. Also notice something. The length of the arrows are somewhat representing the magnitude. 100 न्यूटन वाला एरो छोटा है, 200 न्यूटन वाला एरो उससे बड़ा है और 300 न्यूटन वाला एरो सबसे ज़्यादा लेंथ का है. और यहाँ पे भी मैं उनकी थोड़ी मेंटेन करना चाह रहा हूँ. ये बाद में आपको पता चला क्यों कर रहे हैं हम, जब हम अगली चीज़ों पे आएंगे. Okay, students, then there is a parallelogram method. Okay, so this one's a little confusing. It's so difficult to draw a straight line. Okay, let's take a new color. Wow, blue. Okay, so now we are going to add vectors by the parallelogram. I'll just draw a parallelogram by the parallelogram method. Okay, so far we've talked about vectors that are either in the same direction or in the opposite direction. What if there's a vector जो कि यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और एक वेक्टर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, फिर क्या होगा? फिर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? फिर रिजल्टेंट इस तरह निकालेंगे. we'll complete a parallelogram. Okay, these are your two vectors. Let's say this is 200 newtons का vector and let's say this is 150 newtons. We will replicate these two arrows. हम इसके ऑपोजिट, जहाँ पे एक वेक्टर का हेड है वहाँ पे दूसरे की टेल रख के उसी को एक 200 न्यूटन्स का वेक्टर यहाँ बनाएंगे और फिर यहाँ से एक 150 का वेक्टर बनाएंगे. See, if two vectors are at a certain angle, then parallelogram method is used to find the resultant vector. Complete the parallelogram joining the given vectors at their angle. The length of the diagonal determines the resultant vector. Diagonal क्या होता है? जो इसका बीच का होता है. तो finally, the red. Wait, I have to draw this straight. Okay, wait, let me use this. Okay, so this right here is your resultant vector.
इमेजिन इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसको एक धक्का यहाँ पे 200 न्यूटन का मिल रहा था और एक धक्का यहाँ ऊपर 150 का मिल रहा था, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में. This is your parallelogram method. This is a little difficult. You'll have to practice this on your own. But अगर समझ नहीं आती इसको दोबारा देखें. अगर फिर समझ नहीं आती तो obviously ask me questions on the group. But this is very important. Triangle method, we can skip it for now. If you know the parallelogram method, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. Let's talk about deformation. Okay, next topic. So बच्चों, I'm using a tablet, a weird graphics tablet, so pardon my language, it's difficult writing here. इलास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हुक्स लॉ, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी है. इलास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, देन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड. On releasing the force, if object regains its original shape, then this effect is called elasticity or elastic deformation. बच्चों, imagine if you have a spring and you apply a force here, और इस spring को आप right side पे खींचते हो, then this spring elongates, it stretches, सही है? And then this force is let go, इसको आप छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है. जो फोर्स थी उसने उसके ऊपर लगी, जब फोर्स गई तो वो वापस अपनी जगह पे आ गया. इसको कहते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट, elastic limit or limit of proportionality. It is the maximum extension in an elastic object after which it either breaks or deforms permanently. Now students, imagine if the same string is really stretched. उसको इतना ज़्यादा stretch कर दिया आपने, इतना ज़्यादा stretch कर दिया, अब वो deform हो गया है. आपने उसके ऊपर थोड़ी फोर्स लगाई, वो अपनी जगह पे वापस आ गया. देन यू स्ट्रेच्ड इट अ लिटिल मोर, देन इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. बट देन देयर केम अ मोमेंट व्हेन यू स्ट्रेच्ड इट सो हार्ड दैट इट डिड नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. वो वहीं पे रह गया, या वहाँ पे टूट गया या वहीं पे रह गया. दैट इज कॉल्ड, उस जगह को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट. अच्छा बच्चों, इस सब के बाद यू गाइज मस्ट नो व्हाट हुक्स लॉ इज. हुक्स लॉ हैज फोर्स एंड एक्सटेंशन. आपको दोनों तरह के ग्राफ्स आने चाहिए. मैं अभी फोर्स ऑन द वाई एक्सिस, एक्सटेंशन ऑन द एक्स एक्सिस का ग्राफ बना रहा हूं. तो हुक्स लॉ ये कहता है कि एक स्ट्रिंग है आपका, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हैं उसकी एक्सटेंशन बढ़ रही है, सही है. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी. फोर्स ज़्यादा लगाइए, एक्सटेंशन एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई है. दिस इज हुक्स लॉ. ये वाला जो सारा एरिया है, इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है. जो भी चीज़ जितनी फोर्स लग रही है वो उतनी फोर्स से वापस आ रही है. ओके, तो क्विकली हम इनको सबको लेबल कर देते हैं. दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी. पॉइंट ए, हुक्स लॉ इज वैलिड. पॉइंट ए के ऊपर हुक्स लॉ वैलिड है. हुक्स लॉ यही कहता है कि आप अगर किसी चीज़ को कोई फोर्स लगाते हैं, देन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. पॉइंट बी इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है. इसके आगे फोर्स लगाएंगे तो वो डीफॉर्म हो जाएगा. पॉइंट सी इज द ब्रेकिंग पॉइंट. आपने इतनी फोर्स लगा दी है कि अब यहाँ पे आके तो वो ऑब्जेक्ट वैसे ही टूट गया. इस पॉइंट सी पे आके वो ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग टूट गया. ए टू बी इज इलास्टिक.
this A to B, this part is called elastic deformation. And this is called, B to C is called plastic deformation. I know these are difficult concepts to grab. You can also search the internet for other informative stuff regarding all this. Again, this part is plastic deformation. Uh, let's see. Now there's an experiment to arrangement procedure to see Hooke's law. You have these notes. I would want you. This is your assignment. You have to गो थ्रू दिस योर सेल्फ, पूरा प्रोसीजर पढ़ना है क्या है, और मैं डिस्कस करूंगा इसको अगली क्लास के अंदर क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लंबा हो गया. तो दिस इज़ योर असाइनमेंट. यू हैव टू डिस्कस दिस ऑन योर ओन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दिस इज. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस वॉज योर थर्ड lecture. I hope it has been informative. Inshallah, I'll see you in the next class. Allah Hafiz.